CPT एग्जाम अकाउंट्स 60 मार्क्स का आप लोगों को पता ही होगा. यू हैव बीन स्टडीइंग इट फॉर द पास्ट 6 months, राइट? रिवीजन कैसे करना है? हाउ टू फ्रेम अ स्ट्रैटेजी टू स्कोर गुड मार्क्स, राइट? बहुत सिंपल सा स्ट्रैटेजी है. फोकस इक्वली ऑन थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल पार्ट. ऐसा नहीं है व्हेन इट कम्स टू अकाउंट्स इट हैज टू बी ओनली कैलकुलेटर. जरूरी नहीं है, राइट? हम लोगों का ये इंट्यूशन रहता है कि अकाउंट्स मतलब खाली प्रैक्टिकल. आई वुड लाइक टू टेल यू, आपके एग्जाम में 30 मार्क्स इक्वल वेटेज रहता है. तो सर थ्योरी कहाँ से पढ़ेंगे? आप जो पढ़ाएंगे आज वो नहीं. आई विल जस्ट डू बिट ऑफ रिविजन. I will tell you how to study, how to frame a strategy. It is not possible for me to cover up the entire syllabus in just 5 hours or 4.5 hours as the number of hours you may say, right? So how to study? You have to study institute का study material पूरा एकदम full, especially first 2 chapters. ना पहला तो चैप्टर कोई नहीं पढ़ता सर. जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशन, प्रिंसिपल, ये सब कौन पढ़ता है? तो तुम लोगों को पता है. यू नो द इम्प्लीकेशन ऑफ दैट, बट उससे बेस्ड जो थ्योरी आएगा यू डोंट नो अबाउट इट. अगर मैं आपको बोलूँ आई हैव अ बिल्डिंग एंड आई एम पेइंग 80,000 रेंट. मेरे पास एक बिल्डिंग है, 4 फ्लोर बिल्डिंग है, 4 स्टोरी. हम उसका 80,000 रुपये भाड़ा दे रहे हैं, right? 3 floors I am using it for business purpose and 1 floor I am using it for my own residence. Tell me the amount of rent that I have to debit to profit and loss account. 60,000. ये सबको पता है कि जितना बिजनेस से जितना बिजनेस से रिलेटेड है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आए. पूरा बिल्डिंग का भाड़ा 80,000 है. I am using 3 floors out of 4 floors, so 60,000 will be debited to profit and loss account. This every one of us know. As per which concept we cannot show any personal expense in profit and loss account of the business. ऐसा कौन सा concept बोलता है जिससे कि that differentiates between business expense and personal expense? It's the entity concept, because the entity concept says that business and businessmen are 2 distinct legal entities, right? So it has got nothing to do with practical. It's a completely raw theory which you have to do. Right? Let me take another example. Shareholders are treated as creditors of the company. As per which concept? Shareholders are treated as creditors of the company. Now many students will think these are shareholders are not the creditors. They are the owners of the company, right? सबके दिमाग में तो यही आ रहा होगा ना. क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि shareholders are the creditors of the company. Shareholders are the creditors of the company. Which concept tells that? Before going into the question, आपके सबसे पहले मन में डाउट ये आएगा कि shareholders are not the creditors, they are the owners. Actually, they mean to say that whatever amount the shareholder has contributed to the business, वो business का liability है. Whatever amount the shareholder has contributed to the business, वो business का liability है. This is as per which concept? Again business entity. Got my point? वो लोग तुम्हारा फोकस किस पे डाल दिया? शेयरहोल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. नाउ यू आर स्टक. Now shareholders are the owners of the company. Please kindly rectify the paper and send again. Take a retest for CPT. उन लोग का by the word creditor they mean to say that whatever amount the shareholders contribute to the business, for business it is a liability. Now as per which concept it is? It has to be entity concept, because the entity concept says that business and businessmen are 2 distinct legal entities. They cannot be regarded as one. Right? Now बहुत इनको कैलकुलेटर इतना अच्छा लगता है ना. थ्योरी क्वेश्चन में तो लोग कैलकुलेटर का ऐसे 1-2 बटन दबाते रहेंगे. They have the tendency of just typing
figures in calculator and accordingly they want to show that they are studying very well, right? कोई भी लड़की बगल से मुझे टक 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 जल्दी से दबाएगी calculator. I'll tell you, exam में question आया था and it took 4.5 minutes to solve it. And many people know that we have also organized accounts Olympiad, right? In that Shiksha Ayathan College participated, in that JD Miller College participated, in that Jain College also participated, and Davis was also participant to that. So कहने का मतलब ये है, there were so many several students sitting in the auditorium, but no one gave the correct answer of this question, and ये question CPT में 4 बार आ चुका है. Let me focus. Mr. X started business with rupees 2 lakh cash. He purchased goods worth rupees 40,000. He sold goods rupees 80,000. He incurred expenses of rupees 10,000. What is the value of opening stock? You want me to repeat the figures again? Yes. Write down. Mr. X started business. Mr. X started business with rupees 2 lakh. He purchased goods rupees 40,000, sold it for rupees 80,000. He incurred expenses of rupees 10,000. Calculate the value of opening stock. Take out your calculators fast. Take out your calculators fast. That's very good. Right? बहुत सारा स्टूडेंट इसी में they got stuck. When they see figures ना, they have the tendency of using the calculator. जरूरी नहीं है जब भी आपको एग्जाम में कोई फिगर दिखेगा तो आपको कैलकुलेटर यूज करना है. The basic idea was when the business is started, how can you have opening stock? जब आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो आपका ओपनिंग स्टॉक कैसे हो सकता है? The idea was like this, right? So opening stock is then तो इसका मतलब एग्जाम पेपर में वी शुड फोकस ऑल्सो. एग्जाम पेपर में वी शुड फोकस ऑल्सो, राइट? I am just trying. I haven't started the class yet. I am just trying to tell you what kind of mistakes students commit in exam, because we have to start from there. If I am a doctor, I have to diagnose a patient. I have to first understand उसको क्या problem हो रहा है, accordingly I will be able to diagnose it. So you should know what the problem lies with the student, right? What kind of answer they write, right? कौन से 4 options रहते हैं. बहुत सारे options similar होते हैं आपस में. जैसे I will show you one example. एवरेज स्टॉक 12,000 दिया हुआ है. क्लोजिंग स्टॉक इज रुपीज 3,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक. कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक. ऑप्शंस आर 9,500, 10,500, 13,500, 24,000. Now listen, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? How will you solve this question? Average stock 12,000 है, closing stock is 3,000 more than the opening stock. Let the opening be x, right? So closing कितना आएगा? x plus 3,000.
Yes or no? Let the opening be x, closing कितना आएगा x plus 3000. Now we know x plus 3000 by 2 equals to 12000. Opening plus closing by 2 is average stock. So if I solve the entire equation, I will get x equals to 10,500. Now you got x equals to 10,500. 10,500 is also there in option, right? You are going to tick this. लेकिन हम लोग को पूछा क्या है? कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक पूछा है. मतलब वो लोग x नहीं पूछा, वो लोग हमको x plus 3000 पूछा है, राइट? सो देखो ये भी ऑप्शन में है और ये भी ऑप्शन में है. एक बार अपना नॉर्मल होता है ना, मैथ्स इतना दिमाग से फिर सॉल्व करते हैं अलजेब्रा, इफ यू गेट द वैल्यू ऑफ x दैट इज द आंसर. ये हमारे मन में एक नॉर्मल टेंडेंसी होता है कि x का जो वैल्यू है वही हमारा आंसर है. तो ऐसा नहीं है, ये x आया है, हम लोगों को x plus 3000 पूछा है, क्लोजिंग स्टॉक पूछा है. सो इट हैज टू बी दिस वन. गॉट माय पॉइंट? सो द कंसंट्रेशन लेवल हैज टू बी वेरी हाई. आप जब भी एग्जाम पेपर लिखेंगे, राइट, आपको इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल पूरा थॉरली रीड करना है, देन ओनली यू बी एबल टू अटेम्प्ट सम थ्योरीज, राइट. एंड थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में इक्वल वेटेज रहेगा एग्जाम पेपर में. ऐसा नहीं है थ्योरी में ज़्यादा रहेगा, प्रैक्टिकल में कम रहेगा. दे विल फोकस इक्वली ऑन बोथ थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल्स. क्लियर हो गया? हाँ. सो विल स्टार्ट डिस्कशन वन आफ्टर द अनदर. विल बी बिट क्विक, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर अप द एंटायर यूनिट, राइट. आई एम अज्यूमिंग दैट यू ऑल नो बिट ऑफ अकाउंट्स. आप लोग 6 महीना पढ़े कहीं ना कहीं. सो आई नो यू नो समथिंग, राइट. वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट विद वेरी स्क्रैच. ठीक है, एक बार पॉज करके इसको सेट करेंगे. पॉज कर दीजिए, इसको सेट कर. हर चैप्टर्स के कुछ ना कुछ एमसीक्यू वी हैव फ्रेम, राइट. वी आर नॉट इंश्योरिंग कि यही आएगा एग्जाम में. ऐसा ज़रूरी नहीं कि इस 23 पेजर को पढ़ने से एग्जाम में पूरा पेपर आएगा. इट इज़ जस्ट द ग्लिम्पसेस ऑफ आवर रिविजन क्लास. वी विल ट्राई टू कवरिंग अप द एंटायर पोर्शन जितना पॉसिबल होगा. ठीक है, तो आप लोगों को इसको बस खाली फेज बना के स्टडी करना है. ऐसा बात नहीं कि इसी को रट के जाएंगे, लेटर ऑन यू कमेंट किएंगे सर आप हम लोग को बुलाए, 5 घंटा वेस्ट किए, इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया. डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन. आई हैवंट सेट द पेपर, राइट. सो लेट अस फोकस नाउ. तो सबसे पहला, काफ़ी सारा थ्योरी क्वेश्चन वी कैन आंसर बाय वन सिंगल क्वेश्चन. बहुत सारा क्वेश्चन आता है ना थ्योरी में, हम लोग आंसर कर पाएंगे अगर हम लोग को एक क्वेश्चन का आंसर बताओ. तो व्हाट इज दैट क्वेश्चन? व्हाट इज अकाउंटिंग, राइट. अगर हम लोगों को अकाउंटिंग के बारे में पता है, इन दैट केस वी कैन आंसर सो मेनी थ्योरी क्वेश्चंस. देखो, अकाउंटिंग का बेसिक मीनिंग क्या होता है? अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ transactions and events. Events are also recorded in the books of accounts. Recording of transactions and events which are completed in an accounting period. Which are completed in an accounting period, right? So accounting का basic definition is what? It means recording of transactions and events which are completed in an accounting period. Right? Now, first of all we have to understand transaction. ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसा एक्टिविटीज which can be expressed in terms of money or money's worth. Activities
which can be expressed in terms of money or money's worth. Right? आप लोग कहीं पे सुने होंगे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. Yes or no? We will cover the concept side by side, right? Now money measurement concept क्या बोलता है? Anything which is measurable in terms of money वही हम लोग रिकॉर्ड करेंगे. एक पर्सन का हार्ड वर्क, क्वालिटी, स्किल, ऑनेस्टी, कैन यू मेजर दीज थिंग्स इन टर्म्स ऑफ मनी? तो दीज थिंग्स आर नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि इन चीज़ों को आप पैसा में तोल नहीं सकते. यू कैन नॉट मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी. सो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट वही बोल सकता है. एनीथिंग विच इज मेजरेबल और इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा. राइट? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट एक और चीज़ बोलता है, जब भी हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे वी हैव टू डू इट इन दी रूलिंग करेंसी विच योर बिजनेस इज ऑपरेटिंग. क्या बोलता है? यू हैव टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस इन दी रूलिंग करेंसी इन विच द बिजनेस इज ऑपरेटिंग. अगर मेरा बिजनेस इंडिया में है तो आई हैव टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस इन रुपीस. इफ माई बिजनेस इज इन यूएस देन आई हैव टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस इन डॉलर. मतलब उस कंट्री का जो भी रिपोर्टिंग करेंसी हमको उसमें एक्सप्रेस करना पड़ेगा. तो सर अगर मान लो कोई इंडियन आदमी, इंडियन सिटीजन अगर कोई फॉरेन लोन लेता है उसको तो लोन डॉलर में मिलेगा, तो उसको डॉलर में रिकॉर्ड करेगा कि रुपीस में रिकॉर्ड करेगा? रुपीस में. उसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा.